Should I start? Yes, ma'am. Please start. Okay. Good evening, everybody. Today we are going to start with something to discuss about the diet. Actually, yesterday, day before yesterday, and few days before, we were discussing about something else like health related and precautions and some other harmful effects and other whatever could be happening in life. So today we'll also discuss with something on the diet, but with some different perspectives, like some basic principles, like uh, normal diet. We know about everything about the normal diet when we have to take care about with we know the nutritional components of the diet and all. But what happens when somebody is diseased or somebody is having disease or somebody is suffering with some kind of a disease? Then what we have to do with the diet? I mean, the normal person, you can very well imagine that the one normal person what is eating, the same food cannot be given to some the diseased person, because it entirely depends upon the disease, because disease is an abnormal person and we cannot give everything which we could give it to the normal ones, which we could give it to the normal ones. And then so we have to be taken care. And when we are comparing the diet preparation or the diet planning or the food planning for any diseased person, then we have to taken care of uh, some many aspects, not because not about the diet just but about the disease person's conditions, like he or she can be suffering from some particular disease. Or सबसे पहले तो you have to see that what is the age, what is the sex, and what is the disease with which he or she is suffering, and type of disease like allergic diseases, some deficiency diseases, type of disease में सब कुछ आ जाएगा. Then you have to take care like something. अगर तो deficiency disease, I'm just giving you the overall overview. Like if anybody is suffering from, for example, if somebody is suffering from the deficiency disease, like something which he or she or the kid or the infant or the older person was not taking in his or her diet. So that means that the thing is lacking in that or deficient in that food. So after prolonged deficiency of that one particular ingredient in his or her food, in an individual's food, he may or she may started suffering with one particular kind of the problem. And that means that one particular kind of a disease has reached, and he had or she has started suffering from that deficiency diseases. So that in that case, this is very much clear that which the thing was suffering, we have to supply that thing, that particular nutrient, that particular ingredient in their food. So in that case, it becomes very careful, very easy. But sometimes we are suffering from, we or any other person is suffering from some overeating of the diseases, like something is he or she is taking something, some one particular ingredient or more than one ingredient, more than the required value, more than the required value in their diet. So something more or something less can always cause a problem. You have to take every ingredient which is necessary for the normal growth of the body and the brain health and other metabolic cycles to be performed. So everybody has to take the balanced diet, and every nutrient should be supplied, so that some optimum health should be maintained. Optimum health should be maintained. Some like nothing deficient should be there, and nothing more should be there, and something and this by this we can understand that the diet therapy, we can say that if we are, if any person is giving is deficient in some particular nutrient, then we are providing that nutrient in his or her diet. That means we are providing him or her diet therapy, just to overcome from that deficiency or malnutrition of that particular problem. And we have to supply that particular ingredient to that person only. So when we when we plan diets for
any particular diseased person, suffering from any particular disease, like any kind of a disease, then we have to take care of so many things. We have to study his biochemical parameters, and then the specificity of that disease, whether it's gentle or genetic, inherited, or environment acquired, or some deficiency, some overeating. So we have to take care each and every fact. Only then we can give the diet therapy. In that plan, the diet therapy, why I'm using these words, because when we plan any diet for any diseased person or suffering person, whether drastically suffering or at the diseases at the initial stage or at the middle stage or at the advanced stage, any type of a disease or any type at any stage, when we plan a food diet or dietary diet plan कह सकते हो आप, so that at that time we don't say it a diet plan or a food plan or something else. Like we say it is a diet therapy, because I'll tell you, many of the diseases you can always cure with the diet planning. Like three types of the diseases you can always take, like somebody malnutrition, in which you are suffering with some particular deficiency of one particular ingredient or one or two, or with the combination of the deficiency of one particular vitamins, one particular ingredient, one particular nutrient, or so we can provide that in the diet. Okay, it will take some time to absorb, to get absorbed in the body, and then slowly, if you continue supplying that particular ingredient in that food in which he or she is suffering, so he or she can overcome with that, and the disease, deficiency disease, will definitely be gone by the some amount of time. But if you have like of overeating of something like lipid profiles or sugar diseases, like these kind of a diseases, then you can stop supplying those things which are creating like lipids and sugar in your diet. So stop giving those deficiency diseases. So stop giving those things in the diet, some things they diet in that diet, then we can cure that person's too. So then we can say that this is also a diet therapy. We have to, so that means by removing one or two ingredients which are actually creating a problem, which are actually causing a disease in that particular person, avoiding that or supplying non-supplying of that particular ingredient in the food, we can cure the patient too. And sometimes the third category, like sometimes we are suffering with like loose motions and all, some diseases like stomach, gastrointestinal. So stop, but then we stop giving some heavy foods and all. I'm just giving you the example because this is quite common. So we can give him or her some lighter side of a food, so that the digestive system, when it should be cured, like some of the diseases like these are kind of diseases which we have to restrict that food item for the some time. Okay, for some time, and after that we start giving, like for gastrointestinal, something infection happens in your stomach, and then we stopped giving him the more oily food, more nutrient food, like we start giving the very lighter kind of a food like curd with khichdi and all, so that when after few days, 3 4 5 days after, the he or she will overcome with that um, that disease, that problem of the, and the digestive system now is okay, then he or she can again start having the normal food. It's for time being also. And but the other diseases like coronary artery disease and the diabetes, they, if they are the hereditary diseases, they can but then you have to be careful. Along with the medicine, you have to take care about the sugary item and the lipid items in the food for whole of the life. Along with, like, you have to be physically fit, and you have to control your diet also, and along with the medicine too, sometimes like this also. And sometimes the malnutritive diseases, like one of the thing was missing, then we can
have that in food, and then in more amount, but after some time you can decrease after curing of the disease of that particular deficiency disease. After curing of that disease, you can come to some normal level of supplying of that disease. Like in your book, it's given of the scurvy. I mean, scurvy is a very common disease. It's a tooth gum. When gum started bleeding, it's just because of the vitamin C deficiency. So we can start having the vitamin C like fresh herbs, lemons, oranges, citrus fruits we can give him or her, so that the disease can be cured. So some types, and then we can supply in abundant in starting. When we have to cure the scurvy, we can start giving in abundant. Like, but after some time, when the disease seems to be, we will see that the symptoms are cured of that disease, then after that we have to really decrease the disease, because फिर over ना हो जाए उसके बाद. Then we'll come to the normal levels, which the normal persons take vitamin amount of the vitamin C in their diets. Then we have to come to the normal levels too. And sometimes one more example is of the phenylketonuria. It's also of a genetic disease, like it comes with the faulty genes. When somebody born with some faulty kind of a disease, a faulty kind of a genes, which actually causes the phenylketonuria, like he or she, the kid जो भी जिसके साथ पैदा होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन. सो वी हैव टू, इसीलिए इसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया. सो वी हैव टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ द फिनाइल अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन, सो दैट the young person can be the young person can be treated with this disease. And this shows that बिकॉज आपको ऑलमोस्ट ये डिजीज देनी पड़ेगी जो बिल्कुल ही फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो फिनाइल एलानिन से डाइट में उसके किसी भी इंग्रेडिएंट. देन यू हैव टू रियली सर्च. देन योर बायोकेमिस्ट्री शुड बी वेरी स्ट्रांग. लाइक यू हैव टू सी वेदर द अमीनो एसिड विच इज प्रेजेंट. ऑब्वियसली यू गिव द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फूड to everyone, to every person. You give the, like you give the rice, you give the chapati, you give the sabji, you give the dal, you give the salad and all. So then we have to see whether in wheat, whether in rice, whether in salad, or whether in, I mean, you have to check. I know that in which the phenylalanine is present, but I really wanted to make you sure that whatever the different various dietary nutrients or the various food items you are supplying, with the various kinds of the dietary nutrients, you have to have make sure that no ingredient should contain the phenylalanine amino acid between that. If the person is suffering with the phenylketonuria, it's a genetic disease, because it can lead to a fatal consequences, because he or the kid or the person with this genetic disease, particular kind of he or she cannot just tolerate the presence of the phenylalanine. So you have to make sure that the diet, every food item should be free of the phenylalanine, and make sure that you should not serve the material or the food item which contains the phenylalanine, even in very minute quantities. So make sure all these things. Then this is also one of the example I have given you. So this is also called the diet therapy. When you stop supplying something in your food, diet therapy is not just the mean that you have to supply some good food, multi-nutrients and all. This is also sometimes that when you have to stop supplying something, so that to save that person, save that person, obviously the result should not be, the consequences should not be the fatal ones. And this the diseases, if you talk about the diseases, so in your book the diseases in the diet therapy, with the pretext of the diet therapy, the diseases are I mean divided into the three categories, like disease or disorder caused by the nutrient deficiency, which I have already discussed. That nutrient deficiency, as we have discussed with the example of the विटामिन सी एंड अदर थिंग्स टू. ऑल्सो डेफिशिएंसी किसी की भी हो सकती है, जैसे प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन हो गया,
विटामिन सी की स्कर्वी हो गई, विटामिन ई की कमी से हो गई, विटामिन B12 से साइनोकोबालामिन से भी पर्निशियस अनीमिया और अनीमिया हो जाता है, ठीक है। सो दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग, एनी न्यूट्रिएंट और एनी बैलेंस डाइट में जो पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक तो नॉन एसेंशियल हो गया, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, उनमें से अगर किसी की होती है तो एक कुछ ना कुछ डिजीज होना बिल्कुल लाजमी है ये, ठीक है। सो दीज आर द डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड डिजीजेस विच हैव सेवरल causes, some of which आर फूड एंड न्यूट्रिएंट रिलेटेड। कुछ ऐसी होती हैं कि हम कुछ खाते रहते हैं उसकी एक्यूमुलेशन से भी, ठीक है, व्हेन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ, एंड समटाइम्स उसके साथ फिर द वेरियस रीजंस आर actually present there, because when we have, sometimes we take some good healthy food and our physical exercise is not there. We are actually observing these days there's a sedentary lifestyle, we are actually opting for those. So this can also lead for these diseases, even if you are taking the good food, maybe some in some more amounts, okay. Then the diseases which have no direct food or the nutrient related, sometimes the when we in this category we'll discuss, okay, we'll discuss one by one of these diseases, okay. Giving foods and nutrients in concentrated form is also an effective therapy for those diseases which we have mentioned in the first category, like jab deficiency and then we have to give, and this is a easier kind of the diet therapy, like we this becomes very easy, like this person is suffering from this kind of a deficiency disease or this, for this particular kind of a nutrient, then it's simple, then we'll start supplying that supplement in the food. Then the food and diet plays an all important role in the treatment of these disorders. So जब आपके पास कुछ deficiency है, you start supplying that deficient food nutrient in your food. After some days, when you start supplying, a person is consuming, and after few days, that person will come out of that deficiency diseases, okay. And it would be very clear about very clear as you observe about the symptoms of that disease. Now the symptoms start vanishing slowly, and at the one time comes the symptoms will totally vanish. Then you can start giving that deficient nutrient in a normal amounts. Like in particular, I told you, when the person is deficient, then you might have to supply that particular deficient nutrient in your food in a abundant amount, in a much more amount. But after that, then you have to, when the symptoms are getting cured and the person came out of that disease, that deficient disease, and now he or she no more need or no more deficient in that particular kind of the that nutrient. So then you have to stop supplying that particular ingredient in much more abundant amount. Then you have to supply in some normal amount, like other people they need, okay. Whatever we need, that would be in a smaller and the normal amounts. So, and then next kind of, this was the first kind of the disease. Next kind of the disease in which you can have the example, very common examples like coronary artery disease and the diabetes. Like what we eat, we don't actually exercise, like we have sugary things, we start having the lipid, बहुत ज़्यादा घी तेल का बना हुआ खाना है, and then we don't do exercise to digest as much. But after some long few years, and moreover we are carrying the genes to cause the coronary artery disease and the diabetes. This is very common in Indian scenario. So we all carry many of the families, they carry the faulty genes for causing the coronary artery disease and the diabetes. So, and then we are providing the environmental factor, like we are not doing the some physical exercise, we are opting for the sedentary lifestyle, and we used to remain in some kind of a stress these days because of the work pressure and all. We don't much time as a relaxed, and then and we are eating and eating and eating, sometimes the overeating, and then we are not digesting in a properly, doing the for some exercises and all. So that things when continue for so many years, so these environmental factors along with the genetic factors, they cause the onset of some particular kind of a diseases, specifically the coronary artery disease and of the diabetes. But in that case, what you have to do,
you have to actually stop giving the lipids और घी तेल की बनी हुई चीज़ों वाली डाइट एंड देन शुगर सबसे पहले शुगर एंड along with the medicine too. And I have already discussed this in detail every time I discuss. And the third category of the disease, like the third category of the disease is not actually related to the food items or something. Sometimes you get ill something which is not related to the food, like infectious diseases or मैंने आपको gastrointestinal का I've given it the example. And sometimes some contagious diseases like COVID. COVID is not at all related with the dietary patterns and all. This is not because of the deficiency, this is not because of the overeating, this is not at all related with the diet. But this is also one kind of the disease. But then also we are providing the diet therapy to the COVID patients. You might have heard these patients, when they are admitted to the hospital, they are provided with some kind of the tea, some kind of the hot water, and then some kind of the tulsi and all, ubala hua pani, and some kind of the antioxidants filled diet filled with the antioxidants. Why? This kind of the disease, and they are provided with the halka kind of the food, not very fried and with the sugary food and all. Then we have to see why this is happening, because this at this time we need to boost their immunity. This is one of the reason in the cases of the COVID. So this is actually not the first category of the disease and not the second category of the disease. Kind of the diseases, like simple example, take the COVID. This kind of the diseases, they come into the category of the third type of the disease, which are actually not related with food, not the deficient or by taking more of the food, but diet therapy they required. I mean, the patients of the COVID, they require good kind of that diet therapy. So now we have to supply or provide the good amount, so that to boost their immunity, so that we have to make their defense system strong, or we have to improve their capacity of fighting with that disease. So that could be given with the diet therapy. Obviously they are giving the steam problems and antibiotics and all, lower fever, lower करने की जो भी चीजें medicine they are giving, but along with that we have to give them food, so that उनमें एक stamina उनका बना रहे, and then they can, yeah, stamina बना रहे और उनकी immunity boost हो, so that they have their defense mechanism very strong, and then they can have the ability to fight with that particular kind of. And I've taken the example of the COVID. Obviously COVID persons, they need that, is also called the diet therapy in these kind of the diseases. So we have discussed three kind of the diseases: deficiency and more खाने से जो होती हैं, जो अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा लेते हैं, फिजिकली एंड ऑल एक्टिव नहीं रहते हैं, देन ऑल्सो दे लीड टू सम काइंड ऑफ द डिजीज. एंड आई हैव डिस्कस द थर्ड काइंड ऑफ द डिजीज, which is for which I have taken the example of the COVID, which is not actually related with the food items, but when the person suffer with these diseases, so they need the diet therapy, and the diet should be planned very carefully for these. And now we are coming to the diet planning in a disease. So diet planning for the patient who is suffering with some specific kind of a disease is called a therapeutic diet. वैसे तो ये होता है कि actually we use the therapeutic word for the disease kind of a person. I mean, therapeutic word is exactly opposite of the prophylactic. Okay, therapeutic and opposite is a prophylactic. I've already discussed किया है मैंने पीछे जो chapters होते हैं. Prophylactic means when we give something to eat, or the medicines, or diet, or in any form, just to make sure that we are safe by having this, and we अपनी immunity को strong बनाते हैं, and then we will make sure कि ये उस डिजीज के लिए, अब जैसे क्या है, कोविड है, ठीक है, कोविड जो सफर कर रहे हैं उनके लिए तो हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बट अगर हम क्या करेंगे कि अगर जिसको कोविड नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, खूब विटामिन सी ले रहे हैं. दैट इज व्हाट, दैट्स अ प्रोफाइलेक्टिकली. हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी तो है ही नहीं, वी आर नॉट सफरिंग विद द स्कर्वी, सो दैट वी स्टार्टेड हैविंग द विटामिन सी. बट क्यों ले रहे हैं, सो दैट वी शुड हैव अबंडेंट, बिकॉज दिस इज एन एंटीऑक्सीडेंट विच हैव अ वेरी गुड फाइटिंग ability with the COVID ones. ठीक है. और सबसे बड़ी बात है विटामिन सी, जब थ्रोट को थोड़ी सी इन्फेक्शन होती है ना, इवन इफ यू हैव द विटामिन सी, देन आपका थ्रोट तो वैसे ही ठीक हो जाता है थोड़ा सा,
थोड़ा सा ठीक खराब होने लगे, यू कैन हैव द विटामिन सी, लिम सी और सीलिन एंड ऑल, जो भी आती हैं विटामिन सी की, जो भी आप ले सकते हो। सो उससे फिर क्या होता है कि वो पहले ही ठीक हो जाता है, बिकॉज उससे थोड़ी सी वो, इसीलिए मैं ये यही जो एग्जांपल दे रही हूँ ना, जो हम नॉर्मल डाइट में समटाइम्स वी हैव दैट च्यूएबल विटामिन सी गमीज या टैबलेट्स की फॉर्म में या लोजेंगेज लेते हैं वट एवर, वो क्या है, वी आर नॉट सफरिंग, वी डोंट हैव विटामिन सी डेफिशिएंसी, वी आर नॉट सफरिंग विद द स्कर्वी डिजीज, सो अदरवाइज इफ विल स्टार्ट हैविंग, दैट इज अ प्रोफाइलेक्टिक मीन्स। सो प्रोफाइलेक्टिक ली कोई भी मल्टीविटामिन या कोई भी टैबलेट लेने से हम अपनी फाइटिंग और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, फाइटिंग एबिलिटी, फाइटिंग कैपेसिटी को, वी आर एक्चुअली इंप्रूविंग दैट फाइटिंग कैपेसिटी। Okay, so this is one of the example in days of the COVID, so that we are taking, or sometimes now we have started taking some healthy food like home cooked diet, home cooked दालें, home cooked vegetables, and घर में जमाया हुआ दही दूध उबाल के, and we are actually cleaning our houses, we are sanitizing our houses, all these measures are actually prophylactic, कि हमें हो ही ना, ठीक है, हो ही ना, इसलिए क्लीनिंग को छोड़ दीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, लेकिन डाइट से रिलेटेड जब डाइट प्लानिंग आ गई है, देन आपको समझ आ गया कि व्हाट इज प्रोफाइलेक्टिक मीन्स। और इस प्रोफाइलेक्टिक का उल्टा मीन क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक में क्या है कि जब डिजीज हो गई, so this chapter which we are reading today, we are actually planning the diet planning for those patients who are actually suffering. So जब हम किसी एक्चुअली सफरर्स के लिए, जो ऑलरेडी डिजीज हो चुकी है जिसको, जब उसके लिए हम डाइट प्लानिंग करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक डाइट। बिकॉज जब कोई डिजीज हो जाती है, जब हम उसको कोई मेडिसिन देते हैं, तो वो होती है थेराप्यूटिक। लाइक विटामिन सी की टेबलेट दी है, पहले हुआ नहीं है तो वो प्रोफाइलेक्टिक है, लेकिन बाद में अगर हम देते हैं स्कर्वी होने पे विटामिन सी, तो उसका जो अमाउंट होगा, जो उसकी डोज होगी, एक तो वो भी वेरी करेगी, और उसकी कंपनी भी और होगी, होगा वो विटामिन सी ही, बट बिकॉज now he or she is needs that vitamin C content in very abundant amount, so we can say that in that case the vitamin C becomes therapeutic, because now the person is suffering with the scurvy. So at the same time, when the person is suffering with some particular disease and we plan a diet according to his disease, according to his needs, according to the disease and his needs, so then we plan the diet, and that diet is also said to be as a therapeutic diet. ठीक है, थेरापेटिक मेडिसिन नहीं होती, थेरापेटिक डाइट्स भी होती हैं, वो सब डिजीज के साथ होती हैं। जब डिजीज हो गई, दैट मीन्स एवरीथिंग वुड बी थेरापेटिक, चाहे वो मेडिसिन हो वो भी थेरापेटिक्स होंगी, और जो डाइट है वो भी थेरापेटिक होगी। बट व्हेन द डिजीज इज नॉट देयर इन एनी ऑफ द पर्सन, तो हम सारी चीजें जो भी दे रहे हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं, डाइट प्लान कर रहे हैं, देन इट वुड बी प्रोफाइलेक्टिक। ठीक है, जैसे आसपास कोई डिजीज फैली हुई है, कोविड का तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, देन वी आर सेविंग आवर सेल्स। ठीक है, और हम जो भी आजकल खा रहे हैं कि हमें ना हो, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट है, हमें ना हो, विटामिन सी लो, हमें ना हो, सैनिटाइजर्स हैं वो होना, पर हम चलो डाइट की बात कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन को छोड़ दीजिए, विटामिन सी, विटामिन ई, दूध दही, घर की चीजें, वट एवर, इम्यूनिटी बूस्टर्स आ गए हैं, कुछ आयुर्वेदिक चीजें भी लोग ले रहे हैं, आई मीन यू माइट हैव हर्ड hearing some here and there from the society as well. So so in that case we are taking them as a prophylactic means of, okay. Now how disease affects our nutritional requirement, अब कोई भी disease कैसे सफर कर, कैसे चीजों को चेंज करती है, हमें आपके डाइटरी पैटर्न्स चेंज कैसे कर देती है। अब सपोज आपकी एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, एक नेफ्राइटिस का लिया हुआ है, लाइक कभी कभी किसी को इन्फ्लामेटरी कंडीशंस आ जाती हैं, किडनी डिजीजेज आ जाती हैं। अब जो किडनी डिजीज आ गई, देन यू हैव टू सी कि अब क्या करेंगे, इसकी तो किडनी में है, सो आपका डाइट प्लान भी फर्क हो जाएगा। सपोज आपको डिप्लोमा करके या कुछ करके आपको डाइट प्लान करनी है, बट यू हैव टू टेक होल ऑफ द हिस्ट्री एंड मेक अ नोट। कभी भी आपको किसी के लिए डाइट प्लान करनी है, यू हैव टू सी अबाउट हिज रिक्वायरमेंट्स, एंड जब आप देखोगे पूछोगे तो आपको पूरी उसकी किडनी का, देन यू हैव टू I mean, you must have the knowledge of the anatomy of the kidney. So आपको किडनी की डिजीजेस डेफिशिएंसी की होती है, तब कोई डिजीज होती है, ओवर खाओगे तब कौन सी डिजीज होती है, एंड द नॉर्मल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी यू शुड बी नोन।
ठीक है, आपको भी पता होनी चाहिए। सो जब कोई इन्फ्लामेशन होती है, एंड सबसे बड़ी बात है कि एक्सक्रीशन से आपकी किडनी का रिलेशन है। एवरीथिंग विच कम्स इनटू द ब्लड एंड देन आफ्टर दैट एक्सक्रीशन में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली एक्सक्रीट होती हैं, तो हर किसी का एक नॉर्मल वैल्यू होती है। जब एक नॉर्मल से मतलब एक लोअर रेंज होती है, एक हायर रेंज होती है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज व्हेन दे गेट क्रॉस्ड, चाहे वो लोअर हो रही हैं दैट मीन समथिंग इज एक्यूमुलेटेड, अगर वो ज्यादा हो रही हैं दैट मीन समथिंग इज गोइंग मोर आउट ऑफ द बॉडी। सो दैट मीन्स देन यू हैव टू सी। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर अब आपको देखना पड़ेगा कि अगर उसमें सोडियम एंड क्लोराइड है, वो अगर हो गया आपका नेफ्राइटिस हो गया, तो सोडियम एंड क्लोराइड बॉडी में डेपोजिट होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स जब आयंस डेपोजिट होनी शुरू हो गए, दैट विल लीड टू दी हाई ऑफ द बीपी। सो अगर हाई ऑफ द बीपी में आप क्या करोगे, सोडियम भी ज्यादा होना शुरू होगा, क्लोरीन भी ज्यादा होनी शुरू होगी, आपका बीपी भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। सो आप क्या बंद करोगे, आप उसकी सोडियम एंड क्लोराइड। एंड फूड डाइट कैसे प्लान करोगे आप उसकी? डाइट में भी आपको सोडियम एंड क्लोराइड ऐसे फूड अवॉइड करने हैं जिसमें सोडियम एंड क्लोराइड बिल्कुल ना हो, ठीक है, या कम हो। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन दी लेवल ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड जो आप टेस्ट करवाएंगे उसके, या जो भी टेस्ट के साथ रिपोर्ट के साथ पर्सन आएगा। फॉर दैट यू हैव टू स्टॉप गिविंग हिम और हर द सोडियम एंड द क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम और क्लोराइड दोनों नमक में होते हैं। अब आपको सीधा सीधा पता है कि जब बीपी होता है किसी को, एंड देन वी स्टॉप गिविंग हिम सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट सॉल्ट क्या है? सोडियम एंड क्लोराइड। देन यू हैव टू, देन इसका मतलब आपको एक तो नमकीन चीजें कम देनी है, सब्जी देनी है, दाल देनी है, ऑब्वियसली नमक डलेगा तो वो बहुत कम होना चाहिए। और आपको काउंसल करना पड़ेगा उस पेशेंट को दैट यू हैव टू हैव लेस ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड। अब एक और एग्जांपल है कि उसका मतलब 40 to 50 ईयर्स कोई पर्सन है, उसको इंसुलिन जो है, लैक ऑफ द इंसुलिन, वो कार्बोहाइड्रेट एफिशिएंटली नहीं यूटिलाइज कर पाता। दैट मीन्स insulin is a hormone which is secreted by the pancreas in your body, and उसका फंक्शन क्या है? सीधा सीधा उसका फंक्शन है वट एवर यू ईट स्वीट थिंग्स, जो कुछ भी आप मीठा खाते हैं, द इंसुलिन गेट्स डाइजेस्ट, इंसुलिन हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग दोज शुगरी थिंग्स और एनी काइंड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज मीठे एंड ऑल कार्बोहाइड्रेट के लिए इंसुलिन इज देयर। If insulin is faulty, then what happens? That means more of the carbohydrates they are not excreting, not in the fecal material. Okay, they are not actually digesting, and they start roaming about in your body like in the blood. They are not getting absorbed. Digest तो हो जाते हैं, absorb नहीं हो रहे. So they would, तो आपकी blood में क्या होएगा? Amount of the carbohydrate would be more. तभी तो जब आप फास्टिंग शुगर करवाते हैं या पीपी कराते हैं खाना खा के या जैसे भी करवाते हैं, तो शुगर का अमाउंट ज्यादा आता है। दैट मीन्स शुगर का ऑनसेट हो गया। नाउ यू आर सफरिंग विद द डिजीज विच इज कॉल्ड डायबिटीज। सो व्हाट नाउ यू हैव टू डू, एंड व्हाट द डाइट प्लानर शुड डू, he or she has to supply लेस शुगरी थिंग्स, लेस मीठा या फिर कम मीठा, ठीक है। अगर कम मीठा भी देते हैं, देन ही और शी शुड आई मीन counsel for the to the patient to move, like stop having the sedentary lifestyle. He or she should be guided for doing the more of the physical exercises, like, okay. And then the person is and the person, or sometimes क्या है कि if that thing continues for so many days, then you might have to have the medicine also, that this should be consulted with the doctor also. And third kind of the disease, one person is suffering with the typhoid. उसमें क्या है कि वो बहुत टाइफाइड से जब सफर करता है तो फीवर बहुत हाई रहना शुरू हो जाता है, एंड देन उसका वेट लॉस बहुत हो जाता है। देन वैसे केस में तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा ही अच्छे से आपको फूड सप्लाई करना पड़ेगा। एक तो वेट लॉस हो गया, ठीक है, एनर्जी लेवल लो है, और एंटीपायरेटिक है, थोड़ी इम्यूनिटी बूस्टर देने पड़ेंगे ताकि उसमें जान आए और वो स्ट्रॉन्ग हो, स्टेमिना बिल्टअप हो जाए। थोड़ा हेल्दी फूड भी देना पड़ेगा सो दैट ही और शी कैन पुट वेट टू जो लॉस हुआ है एटलीस्ट, ठीक है। और सब इम्यूनिटी बूस्टर देने पड़ेंगे ताकि जो इन्फेक्शन होने से, अंदर रहने से वो बार बार फीवर होता है, वो फीवर ना हो। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स एंड देन हेल्दी फूड देना, और मल्टी न्यूट्रिएंट्स के साथ न्यूट्रिशनल स्टेटस देख के उसका
multivitamins, then you have to give him these things to the person who has recovered or who is suffering from the typhoid or who has just recovered from the typhoid too. सो आपको बहुत अच्छे से डिजीज्ड पर्सन्स की डाइट प्लान करने के लिए देन यू हैव टू एक्चुअली स्टडी अबाउट द डिजीजेस, स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट। नाउ किस चीज में वो लैकिंग है या किस कैटेगरी की डिजीज है, विच वी हैव एक्चुअली ऑलरेडी कैटेगराइज्ड अबाउट 3 कैटेगरीज। सो वी हैव टू सी इन विच कैटेगरी द डिजीज कम्स एंड व्हाट द पर्सन एक्चुअली नीड्स। So now remember that the requirement जो क्या है, जब हम when we are providing the diet plan, then we have to see what are the requirements, and the requirements are dependent upon the nutritional status, like health status क्या है और क्या कंडीशन है उसकी, एंड मॉडिफिकेशन क्या करनी है उसकी एक्टिविटी में। देखो अब क्या है, आप शुगर वाले पर्सन को एक तो शुगर कम दोगे, अगर थोड़ी सी भी सप्लाई करोगे देन आप उसको कहोगे कि वो फिजिकली एक्सरसाइज करे या सैर करे, वॉक करे, तो आपको वो भी एक्टिविटी करनी है। अब समटाइम्स क्या है कि कुछ ऐसी डिजीज है, टाइफाइड पर्सन है, ऑलरेडी इतना वीक हो चुका है, स्टेमिना इतना लो हो चुका है, एनर्जी लेवल्स लो हो चुके हैं, एंड ही और शी माइट हैव आल्सो सफरिंग फ्रॉम द लो फीवर। पहले हाई हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत फीवर है, तो वो तो फिजिकल एक्टिविटी की कंडीशन में है नहीं। देन यू कैन से दैट बैठ के थोड़ा सा मेडिटेट करो, रिलैक्स करो माइंड को, और उसको इम्यूनिटी बूस्टर्स दोगे और खाने के लिए दोगे, सो दैट ही शुड फील लाइक, बिकॉज ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग लो, सो दैट ही शुड फील लाइक गेटिंग अप फ्रॉम द बेड। बेड से निकले तो सही, ठीक है। समटाइम्स एक्चुअली क्या है कि जब हेल्दी स्टेट होती है तो हेल्दी माइंड भी होता है, हेल्दी बॉडी की स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, देन हेल्दी माइंड भी होता है। इवन अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज है तो आपका माइंड भी थोड़ा सा डिजीज कंडीशन में ही आ जाता है, वो भी ठीक नहीं फील करता है। हालांकि आपको कोई मेंटल स्ट्रेस या मेंटल डिजीज तो नहीं है, बट फिजिकली इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड देन योर माइंड ऑल्सो डजंट फील गुड एक्चुअली, ठीक है। इवन माइंड की या ब्रेन की तो कोई डिजीज नहीं हुई होती है, बट स्टिल बिकॉज ऑल द सिस्टम इज रिलेटेड, द सिग्नल्स दे कम फ्रॉम द माइंड ओनली, कम फ्रॉम द ब्रेन ओनली, एंड the whole body actually follows the orders of the brain only. So when body feels weak, the body doesn't want to work or doesn't have the capacity to work, so the mind also feels sometimes low. Then you have to modify the activities, like you have to take care about the physical health and also the mental health too. Increased or decreased metabolic demands by the illness, यही वाली बात कि increase है metabolic demands illness के बाद या during the illness, or the metabolic demands are decreased, then you have to take care. So nutritional requirements entirely dependent upon, if the demands are increased then you have to increase the nutrients, or if the demands are decreased then you have to decrease the demands of the nutritional status during the illness. And efficiency of the digestive, absorptive and the excretory mechanism. अब क्या है कि it entirely depends कि the person has suffered from which kind of the disease, then that disease, what that disease caused the harm to that particular person, or to the digestive system of that particular person, or the absorption of that particular person, or the excretory mechanism of that person. Like if you're suffering from the diarrhea, that means like everything is disrupted, like digestive, absorptive and excretory mechanism, all the three mechanisms they start behaving badly, madly or badly, दोनों, ठीक है। वहां पे क्या है कि ना तो आप वॉट एवर यू आर ईटिंग वो डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, और फिर डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, एंड एक्सक्रीशन भी नहीं प्रॉपर्ली हो रही। सबसे पहले डाइजेशन प्रॉपर होगा, देन ओनली एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगी, एंड देन एक्सक्रीशन प्रॉपर होगा। So you have to take care, because you have to plan for the diet plan for the diseased person, but entirely you have to see about think about and plan about and specify about the person is suffering from that which particular disease and what actually is required by that person. Now again, influence of the disease on food intake and the dietary pattern. अब क्या होता है, अब कहते हैं कि कोई एक डिजीज हो जाती है, हम खाना तो अच्छे से खा रहे हैं, हो गई ये डिजीज, अब डाइटरी पैटर्न पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो डाइट डिजीजेस हैं वो क्या है, वो क्या करती हैं पेशेंट को। कई बार क्या है कि समटाइम्स ऐसी डिजीजेस आ जाती हैं जो आपकी भूख ही मिटा देती हैं। आई मीन लाइक देयर इज अ लॉस ऑफ एपिटाइट, यू डोंट feel like having food at all. How hard you try, even then you don't feel like having a food.
sometimes these diseases, like even if you have the viral fever, I mean fever goes up and then you feel like don't have anything, आपका मुंह का स्वाद, I mean the taste of your mouth surroundings, mouth inside environment बहुत एक बिटर सा हो जाता है, I mean you don't feel like कड़वा हो जाता है, आपका saliva का टेस्ट भी चेंज होता है, because obviously when you are suffering from some typhoid or some fever, आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, उसमें सब जो एंजाइम एक्टिविटीज हैं, बिकॉज उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, यू नो दैट द एंजाइम्स आर इन्वॉल्व एवरीवेयर इन एवरी सिस्टम, but in the digestive system also so many enzymes are involved, so when the temperature and their जो working है enzymes की, that requires optimum temperature and optimum pH, and but जब body का fever बहुत raise हो रहा है, that means वो enzymes को क्या affect कर रहा है, obviously that would affect the enzyme activity, enzyme act नहीं कर रहे हैं और digestive enzymes act नहीं कर रहे हैं, तो digestive system ही खराब हो गया, सिस्टम खराब हो गया, एब्जॉर्प्शन खराब हो गया, एंड देन एक्सक्रीशन भी खराब हो गया। सो एक सिंपल फीवर, हाई फीवर भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देता है, एंड देन एट दैट टाइम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ही नहीं है, एंजाइम दे आर नॉट वर्किंग, एंड जो भी आपने थोड़ा सा खाया था दैट इज ऑल्सो इन द स्टमक ओनली, बिकॉज वो भी अनडाइजेस्टेड अभी पड़ा है, देन यू डोंट फील लाइक, आप फ्लैचुलेंसी होनी शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स होनी शुरू हो जाती हैं, यू ऑल फील, एवरीबडी, आई मीन सबको पता है ऐसी चीजें। सो डिजीज जो सबसे पहले है वो कई बार ऐसी चीजें भी कर देती हैं कि लॉस ऑफ एपिटाइट है और फिर पर्सन क्या है वो ईट लेस करना शुरू कर देता है, एक तो ही इज और शी इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर और टाइफाइड और समथिंग एल्स, एंड दूसरा लॉस ऑफ एपिटाइट है, ही और शी स्टार्टेड ईटिंग लेस, फिर उसे वीकनेस, एनर्जी, स्टेमिना कहाँ से आएगा, फिर शी और शी इज नॉट ईटिंग एंड मोर ओवर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, सो फीलिंग लो आनी शुरू हो जाती है, एंड देन फील मोर हंग्री एंड देयरफॉर ईट मोर। Sometimes what happens in some kind of the disease like in the diabetes or in the coronary artery disease, जो metabolism है बहुत फास्ट भी हो जाता है, एंड जो शुगरी थिंग्स है ना इनकी ना कुछ ऐसी क्रेविंग हो जाती है, जिसको जो चीज मना करो वो वही मांगता है, शुगर वाला पर्सन है उसकी क्रेविंग ना फॉर स्वीटी थिंग्स ना मोर हो जाती है, एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज वाले हैं दे स्टार्ट इविंग, उनको सोडियम क्लोराइड कम देना होता है, दे स्टार्ट हैविंग मोर, एंड समटाइम्स उनको लिपिड प्रोफाइल उनका बंद किया जाता है कि लिपिड प्रोफाइल नहीं, सॉरी लिपिड थिंग्स, तेल घी वाली चीजें उनकी डाइट में हम कम करते हैं, दे स्टार्ट हैविंग मोर, सो उनकी एक्चुअली ना हंगर भी बढ़ जाती है, और इन सम अदर डिजीजेस मे बी एनी, यू कैन टेक एनी एग्जांपल इन विच you can recall any disease in which the appetite becomes more and more cravings हो जानी शुरू हो जाती हैं, patient needs more and more food, तो उसमें क्या है कि वो उस डिजीज का साइड इफेक्ट हो जाता है, उनका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, और वैसे भी सफर कर रहे हैं तो वेट पुट ऑन होने से उनका स्टेमिना लो होना शुरू हो जाता है ऑब्वियसली, और कोई ना कोई एक ऐसी डिजीज भी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और हार्मोन्स गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जब एंजाइम्स को ओवर ईटिंग को डाइजेस्ट करना पड़ता है देन ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है, हार्मोन्स को भी जब ओवर ईटिंग के लिए कोई मैसेजेस देने देन ऑल्सो प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम होती है, ओवर ईटिंग इज ऑल्सो प्रॉब्लम, लेस ईटिंग इज ऑल्सो प्रॉब्लम। सो ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि समटाइम्स हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, अ पर्सन जो ओबीज हो गया उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फ्लैचुलेंस रहनी शुरू हो जाएगी, इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, और इरिटेटिंग इफेक्ट ऑफ द हाई फाइबर फूड्स कंडीशन व्हाट इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो जाता है, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जब इन्फ्लेम्ड हो जाता है, एंड देन टाइप ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशंस, नाउ व्हाट वी डू, जब ऐसी सी चीजें अब हमने पढ़ ली हैं, वी नो अबाउट द डिजीजेस, वी नो अबाउट द पर्सन, वी नो अबाउट द स्पेसिफिक रीजन, नाउ वी हैव टू प्लान द फूड, एंड देन प्लानिंग करनी है तो अकॉर्डिंगली हमने सारी चीजें देखनी है कि इस किसके अकॉर्डिंगली हमने करनी है, अब क्या करनी है ये भी हमें देखना है, डाइट टाइप्स ऑफ द डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थेराप्यूटिक डाइट्स, ठीक है, और जो थेराप्यूटिक डाइट्स हैं ये ऑलवेज क्या होता है, मॉडिफाइड वर्जन होता है नॉर्मल डाइट्स का, obviously therapeutic diet हम वैसे थोड़ा खाते हैं, I've already told you the therapeutic diets which we supply when the patient is suffering actually, so when the patient is suffering, so we have to modify some things in the normal diet, so जब हम एक बीमार बंदे के लिए डाइट बनाते हैं that we call to that diet is a therapeutic diet, and this is a normal or modified version of the नॉर्मल डाइट, थेराप्यूटिक डाइट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें काफी सारी चीजों का हमने ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसकी कंसिस्टेंसी में चेंज करनी है हमने, उसमें फ्लूइड का या सॉफ्ट डाइट्स का अमाउंट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, व्हाट वी हैव टू डू, ओके, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द डिजीज विच वी आर डिस्कसिंग, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी फूड के फ्लूइड की और सॉफ्टनेस की डाइट की देखनी पड़ेगी,
बिकॉज हम ज़्यादातर थोड़ा सा ज़्यादा फ्लूइड एंड सॉफ्ट डाइट्स प्रोवाइड करते हैं हर एक थेरापेटिक डाइट में, बिकॉज एवरी पर्सन इज अ डिजीज पर्सन। उसके चाहे उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज नहीं है, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम सम अदर डिजीज, देन ऑल्सो वी प्रोवाइड सम सॉफ्ट काइंड ऑफ और मोर फ्लूइड डाइट्स, बिकॉज ये कॉमन होता ही है, बिकॉज उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। बिकॉज जो पर्सन बीमार है ना, वो ज्यादातर बेड पे रहेगा, तो अगर हम उसको हार्ड फूड या और कुछ ज्यादा देते हैं तो फिर उसके लिए दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सो हमने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, बट इन अ फ्लूइड फॉर्म और इन अ सेमी डाइट फॉर्म। ये आप रख ही लीजिए कि थेराप्यूटिक हमें तकरीबन तकरीबन फ्लूइड और सेमी सॉफ्ट डाइट्स ही देनी चाहिए, सिंपल डाइट्स देनी चाहिए। सो इंक्रीज और डिक्रीज इन द एनर्जी कंटेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, अब ये डिपेंड करता है, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द कैलोरी इनटेक। अब लाइक कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, डायबिटीज है, उसमें हमें कैलोरी इनटेक कम करना है। But after suffering from the typhoid or any other disease like COVID, then we have to increase the calories, because the person has already become low. He or she is feeling low. हमें स्टेमिना बढ़ाना है, हमें इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, देन वी हैव टू प्रोवाइड सम हाई कैलोरी फूड। सो ऐसे मतलब इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन लाइक इंक्लूजन और मोर और लेस अमाउंट ऑफ वन न्यूट्रिएंट एंड ऑल। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी डेफिशिएंसी डिजीजेज और समथिंग। अगर किसी एक चीज की डेफिशिएंसी हो गई है, देन वी हैव टू प्रोवाइड और सप्लाई दैट one particular ingredient in the food. Then increase or decrease in the fiber content. अगर digestive है, constipation की disease है, then we have to increase the fiber content, and BP है, then also we increase the fiber content. डायबिटीज है तो फाइब्रस फूड कहते हैं, सो दैट फिलिंग की उनको एक सटाइटी फीलिंग आ जाए, सो दैट दे शुड नॉट ईट मोर एंड मोर। सटाइटी फीलिंग आ जाएगी, सटाइटी लेवल अचीव हो जाएगा, देन वी कैन हैव गुड अमाउंट। ठीक है, एंड देन एलिमिनेशन ऑफ स्पाइसेस एंड कंटामिनेंट्स। ठीक है, कॉन्डिमेंट्स। एंड देन वी हैव टू सी लाइक अगर हमें कोई ऐसी डिजीज है, डाइजेस्टिव डिजीज है, तब हमें तेज फूड, मसालेदार फूड नहीं देना है। ठीक है, ब्लैंड डाइट देनी है जिसमें बहुत नमक, मिर्च, मसाले ज्यादा ना हो। ओके, then we have to provide that disease. It entirely depends upon the particular kind of the disease. Inclusion or exclusion, what kind of specific foods or diet or allergic, sometimes क्या है कि जैसे I've given you the example of the phenylketonuria, तो अगर आप phenylketonuria disease है, then we have to avoid the phenylalanine amino acid in the diet, so we will stop giving those. You will find, अच्छा अब क्या है कि जैसे नॉर्मल डाइट है, मॉडिफिकेशन कंसिस्टेंसी में करेंगे, या तो हम फुल फ्लूइड डाइट देंगे, या क्लियर डाइट देंगे, या फिर सॉफ्ट एंड मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट है, मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट डाइट, ज्यादा सॉफ्ट डाइट। अब क्या है कि क्लियर फ्लूइड डाइट इज प्रेस्क्राइब्ड व्हेन intake of the nutrients must be restricted when an acute illness of the surgery। अब क्लियर कब देते हैं, जब हमारी इंटेस्टाइनल या स्टमक के आसपास या इंटेस्टाइन या लिवर और गॉल ब्लैडर ऐसी चीजों की जब हमारी होती है, देन वी गिव द क्लियर फूड डाइट, सो दैट कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत ना आए। एंड देन लाइक एग्जांपल्स लाइक वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, डिटेंशन एंड डायरिया होता है, तब इन दिनों में हमें क्लियर फूड डाइट देनी होती है। फुल फ्लूइड डाइट, उसमें ताकि कुछ ना हो। फुल फ्लूइड डाइट ऑन द अदर हैंड की एक्यूटली अनेबल टू च्यू और स्वेलो। कई बार ऐसे ओल्ड पेशेंट्स हैं या कुछ भी है, उनके एनर्जी लेवल तो ठीक रखना है, वो ना तो च्यू कर सकते हैं, या फिर बेड रिडन हो गया पेशेंट, अनएबल है, अनकॉन्शियस ज्यादा है, मतलब लेस कॉन्शियस है, देन वी हैव टू सप्लाई, और जो च्यू करने की नहीं है, आफ्टर फ्यू डेज देन ही और शी मे माइट बी नॉर्मल, बट इन दैट कंडीशन वी हैव टू गिव फुल फ्लूइड डाइट। इसमें क्या है कि ऑल जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमने देने हैं और रूम टेम्परेचर पे देने हैं, ताकि बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहे। एंड कंटिन्यू करना है कि आयरन सप्लीमेंट्स भी हम देते रहें। ठीक है, एंड देन ताकि एनर्जी लेवल ज्यादा रहे। एंड सॉफ्ट जो होता है वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना, लिक्विडी फॉर्म तो नहीं होता, सेमी सॉलिड एंड सॉफ्ट फूड्स होते हैं जिनको इजी हो डाइजेस्ट करना, हल्का होता है फूड, और जो च्यू करने में दिक्कत ना आए, बिकॉज वी आर नाउ सर्विंग टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू द डिजीज। सो इट ऑल्सो कंटेन्स नो हार्श फाइबर या फिर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स भी नहीं देने हैं, मसाले भी नहीं डालने हैं, कॉन्डिमेंट्स भी नहीं डालने हैं, बड़ी इलायचियाँ ये वो सब तड़का लगा के नहीं देना है। सॉफ्ट डाइट में बी यूज्ड इन द एक्यूट इन्फेक्शंस लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, या फिर कोई सर्जरी के बाद होती है, क्योंकि वो ये वाली डाइट्स जो हम नॉर्मल खाते हैं
वो नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, बट बी केयरफुल दैट वी हैव टू सप्लाई ऑल द available or the all the required nutritional ingredients. And mechanical or dental soft diets are normal diets to help those with the dental problems. ठीक है, सॉफ्ट डाइट्स हम डेंटल प्रॉब्लम्स ओल्ड पर्सन को भी देते हैं, बिकॉज दे हैव द प्रॉब्लम विद देयर टीथ, सो दे कैन नॉट चूज, सो वी हैव टू सप्लाई ऑलवेज दी सॉफ्ट डाइट्स. A word about methods of the feeding would be helpful here. फीडिंग कहते हैं उसको, जैसे ओरली हम चम्मच से कई बार हमें बेड रिडन पेशेंट्स को पिलाना पड़ता है, बट न्यूट्रिएंट्स हमें होते हैं, सूपी राइट्स होती हैं, जूसी राइट्स होती हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो दीज आर यूज्ड फॉर द पर्सन who can eat, digest or absorb some food to meet their nutrient needs. ठीक है, वीक नहीं करना है. And patients suffering from the severe illness cannot consume the food even in the form of the fluids orally. For such patients, special feeding methods have been devised. I mean, there are some kind of the devices too. जब person नहीं कर पाता है, then we have to take the help of those digestive devices. Like that is called the dietary management of the disease. Dietary management मतलब we have to manage the diet, how to insert, how to put into that with some dietary aids, digestive aids. एक होती है इंट्रावीनस फीडिंग. इंट्रावीनस तो सीधा सीधा हो गया कि आपको इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावीनस देना है, एंड देन आपको उसी में जाके डाइट डाल के कुछ ना कुछ देना है, जैसे लिक्विड जा रहा है तो उसके बीच में ग्लूकोस या डेक्सट्रोस ऐसी चीजें हम डाल के देते हैं. ठीक है, ट्यूब फीडिंग होती है नेजोगेस्ट्रिक. नेजल चैम्बर से हम एक कैथेटर डाल के दे देते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी डाइट लिक्विड ही होगी, ऑब्वियसली मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, मेडिकेटेड डाइट्स ही होती हैं, देन वी कैन ईट. गैस्ट्रोस्टोमी लाइक ट्यूब थ्रू फीडिंग थ्रू दी स्टमक. आई मीन ट्यूब ऊपर से ही, ये बहुत सीरियस पेशेंट्स होते हैं with for what I am talking about. So this is also gastrostomy जो होती है वो स्टमक में ही सीधा पाइप है और ऊपर से फूड लिक्विड ही ऑब्वियसली डालना पड़ेगा जस्ट टू मेंटेन देयर एनर्जी लेवल्स. सो वो सीधा स्टमक में जाएगी. एंड जीजोस्टोनॉमी वो भी जेजुनम में सीधा का सीधा डायरेक्टली आप करेंगे इंसर्ट, एंड देन ठीक है. इंट्रावीनस फीडिंग में क्या है, द मेथड इज यूज्ड टू नेसेसरी टू रेस्ट द पेशेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल द फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड intravenously contains solution of the glucose, amino acid, salt या vitamins. So ट्रांसफ्यूजन भी इस तरह से होती है प्लाज्मा की अगर करनी हो तो. ठीक है, इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वाटर जो होता है प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोलाइट्स, वो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल कर लेगा, और लॉस ऑफ टिश्यू प्रोटीन नहीं होएगा. ठीक है, प्रोटीन जो टिश्यूज का प्रोटीन है, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज है उसका जो प्रोटीन है दैट वुड बी मेंटेन्ड. प्रोवाइड एनर्जी टू मीट डेली नीड्स. ठीक है, और डेली ट्यूब फीडिंग में क्या है कि दिस मेथड इज अप्लाई फॉर द पेशेंट टू अनेबल टू च्यू, जो बिल्कुल च्यू नहीं कर पाते हैं उसमें सीधा का सीधा, एंड देन जिसमें इसोफेगस या की सर्जरी हुई होती है, कैंसर ऑफ द इसोफेगस है, सो दैट यहाँ का अवॉइड करके सीधा स्टमक में देते हैं, सो दैट उतने दिन हम उसको नहीं ठीक करेंगे क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो वो क्लियर हो जाए तो ठीक रहेगा. नियोगैस्ट्रिक फीडिंग इज सेवरल एडवांटेजेस हैं नियोगैस्ट्रिक फीडिंग के. ठीक है, ऑल दिस कैटेगरीज आर द नियोगैस्ट्रिक फीडिंग्स एंड फीड्स कैन बी प्लान टू न्यूट्रिशनली एडिक्वेट. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द फ्लूइड्स कैन बी गिवन सेफली and be dangers to the parental feeding can be avoided. ठीक है, foods and drugs will be disliked by the patient can be anismet. Sometimes क्या है कि patient मुंह से ले नहीं पाता, वॉमिट कर देता, कुछ भी है, तो ऐसी जब चीज़ों के हम फूड भी इस चीज़ों से लिक्विड से दे रहे होते हैं तो बीच में मेडिसिन डाल के भी दे देते हैं, सो दैट इट शुड रीच टू द स्टमक सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड एंड कुड आई मीन जो मेडिसिन देनी है उसका इफेक्ट हो जाए. ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल केयर. व्हाट इज न्यूट्रिशनल केयर? all whatever we are discussing, we are providing the diet according to the nutritional requirement of that particular person, and we are planning the diet plan according to the specific needs of the patient and according to the whatever etiology of that disease. So we are modifying the diet or food which is called the therapeutic diet. So this is all called the nutritional care. So what is that concept of the nutritional care? ये क्या है कि हॉस्पिटल सेटिंग्स या क्लिनिक या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ये ज़्यादा होता है, जो अभी नियोगैस्ट्रिक जो मैंने आपको नियोगैस्ट्रिक फीडिंग सिस्टम्स बताए हैं. ठीक है, ये दिस इज द मीन ऑफ द प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग डाइट टू द पेशेंट्स इन एन इंडिविजुअलाइज्ड मैनर. इंडिविजुअलाइज्ड मैनर
मीन्स आप सबको एक तरह से नहीं दे सकते हो, हर किसी की डिजीज फर्क है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज सफरिंग विद सम पर्टिकुलर सेपरेट काइंड ऑफ अ डिजीज, सो यू हैव टू प्लान सेपरेटली फॉर एवरी पेशेंट। सो आपको केयर क्या करनी है इन चीजों की, द नेचर एंड पॉसिबल ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, सबसे पहले नेचर देखिए, और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज देखिए कि कितनी देर हो गई है, बंदा बहुत वीक है, देन यू शुड सप्लाई अबंडेंट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अंडरलाइंग कॉज ऑफ द डिजीज, सबसे बार रीजन क्या है डिजीज का, जब वो रीजन के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। तो अगर आप रीजन के अकॉर्डिंगली चलेंगे देन आपको फिर उससे दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज अगर रीजन है और आपने डाइट भी वैसी देनी शुरू कर दी जो कि रीजन को ही एग्जैजरेट कर रही है, देन इट वोंट सर्व दी पर्पस। ठीक है। एंड फूड हैबिट्स ऑफ अ पर्सन, समटाइम्स क्या है कि एक पर्सन को कोई किसी तरह का फूड अच्छा लगता है, तो आप उसको वो फूड उस स्पेसिफिक डिजीज में आप दे भी सकते हैं, सपोज आपने सब कुछ देख लिया तो दे सकते हैं। सो देन यू हैव टू प्रिपेयर फूड लाइक दैट, बिकॉज आपकी उसकी लाइकिंग है। तो आप अगर वो खा नहीं पा रहा सॉलिड फूड, देन आप उसका सूप या किसी और तरह से बना के, तो यू कैन चेंज, ऑलवेज ऑल्टर द प्रिपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ food which the patient really wants to have that food because of the liking, particular liking towards that food. So nature of the dietary change is required. So wahi ki nature of the jo dietary changes they are required in that particular disease when the person suffers with that particular disease, and then you have to change करनी पड़ती है आपकी nature of the dietary changes. I mean कोई चीज आपको नहीं देनी है, कोई देनी है particular. This is what we are discussing in this whole chapter. Problem of such good food allergies. अब आपको ये भी ख्याल रखना है कि ये the person is already suffering और उसको इसके particular food से allergy भी है, then you have to have, yeah, and then you have to particularly avoid that particular kind of the food, so that the जो ऑलरेडी एक डिजीज है और उसके साथ एलर्जिक कंडीशंस और किसी फूड एलर्जी से क्रिएट करके हम और ऐड नहीं करेंगे, और वी डोंट वांट टू एग्जैजरेट द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो ऑन द बेसिस ऑफ द डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर है इज ऑल्सो नीड एनी स्पेशल फीडिंग मेथड्स, स्पेशल फीडिंग मेथड्स भी देखने पड़ेंगे. The prescription should be ideally specify the amount of the calories, proteins, and nutrients. Obviously, we have to take care about the patients, that we have to supply particular amount of the vitamins, particular amount of the dietary to build up the stamina, to bring up the energy levels, to bring up the stamina, and to boost the immunity system, to boost the fighting spirit of that particular patient against that particular disease. सो नाउ इंडिविजुअलाइज्ड जब हम प्लान करते हैं तो प्लान क्या होता है, एक तो एस्टिमेट लगाना होता है सबसे पहले हमें, एडिक्वेसी ऑफ द पेशेंट्स एंड यूजुअल डाइटरी इनटेक्स कितनी है उसकी, वो कितना खा लेता है उसके अकॉर्डिंगली. अगर वो नहीं खाता है हमने ज्यादा बना के क्या करना है, द अमाउंट भी हमें देखना है. उस अमाउंट में जितना वो खाता है उसी अमाउंट में ही हमें, ऑब्वियसली हमने लिक्विड डाइट दिया है, वो 2-4 चम्मच पी के हट जाता है, एंड हमने एक गिलास पिलाना था या हाफ गिलास पिलाना था, अब वो नहीं लेता, 2-3 चम्मच लिए, तो डाइटरी इंटेक्स कैसे कंप्लीट होगा. देन आपको देखना है कि हाफ गिलास से भी हाफ गिलास बनाइए, बट उसी में उसके इंग्रेडिएंट्स एंड एनर्जी लेवल शुड बी प्रोवाइडेड इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द फूड, सो दैट वो अंदर तो जाए उसके. बिकॉज हम पेशेंट को नहीं कुछ कह सकते, बिकॉज ही और शी इज ऑलरेडी सफरिंग. ठीक है, मूड लो है, स्टेमिना लो है, बेड रिडन है, इज सफरिंग विद सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस. सो हमने उसे ठीक करना है, डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स हैं, देन उसकी एक पर्टिकुलर लाइकिंग है, फूड वो खा नहीं रहा है, एनर्जी लेवल कैसे करें, मुंह में उसके जाता नहीं है, देन यू हैव टू एक्चुअली बी वेरी पर्टिकुलर. आपको फिर देखना है कि उसको क्या पसंद है और क्या दिया जा सकता है, कितने अमाउंट में दिया जा सकता है और कितना वो खाता है, फिर उसी अमाउंट में आपको उसका करना है. सो ये सारी चीजें आपको ना, नॉर्मल डाइट प्लान आप करते हैं किसी के लिए, तो जब थेराप्यूटिक डाइट प्लान करते हैं आपको क्रिटिकल कंडीशन भी आपको देखनी है, डिजीज भी देखनी है, स्पेसिफिसिटी ऑफ द डिजीज देखनी है, एपिडेमिक एटियोलॉजी ऑफ दैट डिजीज देखनी है, कंडीशन सेवेरिटी ऑफ द डिजीज देखनी है, सेवेरिटी ऑफ द डिजीज ऑफ दैट पेशेंट देखनी है. ठीक है, फिर और ऑलरेडी वो कितना एनर्जी लो जा चुकी है और कितनी देर से वो सफरर है विद दैट पर्टिकुलर डिजीज, देन यू हैव टू प्लान. ठीक है, थोड़ी सी लाइकिंग का भी ख्याल रखना है
ठीक है, और फीडिंग सिस्टम पे है, देन ऑल्सो सॉफ्ट देना है, लिक्विड देना है, क्या देना है, देन आई मीन सो मेनी थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड टू प्लान दैट डाइट। ठीक है, प्लान फॉर ओवरकमिंग न्यूट्रिशनल एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब आपको क्या है कि आपको ओवरकम करनी है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो उसकी अराइज हुई है, एंड जो और भी प्रॉब्लम डिजीज चल रही है, देन ऑल्सो एक तो आपको न्यूट्रिशनल लेवल भी लेके आने हैं, और जो और डिजीज प्रॉब्लम है उसको भी एग्जैजरेट नहीं करना है डाइट से। आपको ऐसी डाइट प्लान करनी है, एनर्जी लेवल भी आए, उसकी लाइकिंग भी हो, उसके न्यूट्रिशन लेवल भी ओवरकम हो जाए, एंड देन डिजीज में भी वो ऐसी चीज हो जो डाइट आपकी है वो डिजीज में अलोंग विद दी मेडिसिन वो आपका को होता है ना, जैसे साथ में मिलके काम करे। ठीक है, तो उसका ऐड ही करे उसका मेडिसिन का इफेक्ट, मेडिसिन भी ठीक कर रही है, आपकी डाइट भी हीलिंग को मेडिसिन की को बढ़ाए। ठीक है, सो दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पेशेंट एजुकेशन। अब क्या है कि समटाइम्स ना पेशेंट क्या होते हैं वो बिल्कुल भी सुनते ही नहीं है बात। आई मीन कईयों का कई लोग पढ़े लिखे हैं या मन मार के पी जाते हैं, उनको पता होता है कि जल्दी ठीक करना है, काउंसलिंग करनी होती है। समटाइम्स जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना पेशेंट्स के, मतलब ऑब्जेक्टिव आपको ये एक साथ में रखना है, जो पेशेंट है उसकी एजुकेशन लेवल बहुत लो है, उसे समझाना ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क होता है समटाइम्स, बट अनएजुकेटेड पर्सन भी दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द थिंग्स कि ये मेरे लिए अच्छा है, और जो एजुकेशन वाला पर्सन होता है उसको आप समझा सकते हैं। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल ओनली। कई बार वो इरिटेबिलिटी फैक्टर होता है, कई बार ऑल आपको काउंसलिंग चीज करनी पड़ती है ज्यादा। ठीक है, एंड और फिर आपको हमेशा जब आप एक दिन डाइट देते हैं, दूसरे दिन डाइट देते हैं, तीसरे दिन डाइट देते हैं, और साथ में उसकी मेडिसिन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, देन आपको फिर उसका ना नोट्स बना के रखने होते हैं कि आज वो कितना सफर कर रहा है, आज कितनी प्रोग्रेस हुई है, और कल कितनी प्रोग्रेस हुई थी, और उसके बाद वो कितना है, और आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी है। और फिर क्या हुआ कि समटाइम्स क्या है कि एक 4 दिन पहले वो बंदा बिल्कुल नहीं खा पा रहा था, उसके बाद क्या होगा 4-5 दिन के बाद हो सकता है वो पर्सन जो है वो अब थोड़ा मेडिसिन के इफेक्ट से, थोड़ा आपकी डाइट से, एनर्जी लेवल अप होने से, तो थोड़ा इम्यूनिटी बूस्ट होने से 4-5 दिनों में वो पहले से started that particular patient has started now feeling little bit better. So now you what you can do, like पहले वो थोड़ा सा खाता था, उसमें आपको एनर्जी लेवल, देन यू कैन इंक्रीज द अमाउंट एंड एनर्जी लेवल, उसमें थोड़े से और इंक्रीज कर सकते हैं, अमाउंट भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स नीड्स एंड मूड एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो आपको नोट रखना है। उसके बाद अगर आप पहले बिल्कुल लिक्विड पे थे, फीडिंग एड्स की मदद से थे, फिर हो सकता है कि फीडिंग एड्स हट जाएं, एंड देन आप वैसे लिक्विड फूड दे रहे हो, फिर थोड़ा सा सेमी सॉलिड पे आइए। ठीक है, फिर सिंपल फूड पे आइए, एंड देन स्लोली 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 ये आपको डेली प्रोग्रेस भी पेशेंट की बनानी पड़ेगी, ओनली देन यू कैन एनालाइज कि नाउ व्हाट यू कैन डू। एंड ऑब्वियसली ये जो पेशेंट्स होते हैं विद द obviously with the consultation of the doctor you have to, ठीक है, and then what we need to जो एडमिनिस्ट्रेशन हमने करनी है कि हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ टीम होती है ये सारी, along with the physician or the doctor nurse and along with the dietitian too। डाइटिशियन की पूरी वैल्यू है, ठीक है, इस हेल्थ टीम में। सो योर रोल इन द न्यूट्रिशन एंड द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो उसमें क्या है, एक तो आपको प्रमोट करना है प्रिवेंटिव मेजर्स इन डीलिंग विद द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, और हाई रिस्क ग्रुप जो होते हैं पॉपुलेशन के, एंड हाई रिस्क में वही जो डिजीज पर्सन हैं जो ऑलरेडी एलर्जिक हैं, ठीक है ना, डेफिशिएंट हैं, या मोर से ईटरी से हैं, या कोई और फूड एलर्जी है, सफरिंग पर्सन हैं बिकॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक डिजीज और समथिंग। सो advising the people who are already suffering from disease, who are at risk of the developing a disease, like sometimes जैसे हमें पता ही है कि इसमें ये causing factors हैं, like hereditary disease है, तो वो हो सकती है, तो उसको ऑलरेडी या तो सफर कर रहा है या रिस्क पे है। Putting people in touch with the primary health centers, sub centers, स्टाफ और अदर फील्ड लाइक फंक्शनरीज हु कैन हेल्प, आप उनको गाइड कर सकते हैं, हेल्थ सेंटर्स पे भेज सकते हैं जब अभी स्टार्टिंग है। ठीक है,
तो इन्फॉर्मिंग द कम्युनिटी अबाउट द रेफरल सर्विसेज, लाइक समटाइम्स हमारे पास ऐसी सर्विसेज होती हैं जहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, जिसको कोई दिक्कत है वो जा सकते हैं। इवन समटाइम्स कई ऐसी वॉलंटरीली सर्विसेज भी चल रही होती हैं, सब कुछ चल रहा होता है, बट समटाइम्स क्या है कि इवन अवेयर होते हैं, देन ऑल्सो वी डोंट गो, समटाइम्स वी गो एंड वी टेक द सजेशंस, देन वी डोंट फॉलो। ये सारी चीजें हमें रिमूव करनी है हमारी सोसाइटी में से, ठीक है। एंड देन इंफॉर्मेशन जो आपकी मैनेजमेंट जो हमें प्रोवाइड की जाती है मैनेजमेंट ऑफ द रूटीन केसेस में, जैसे रोज की रोज, जैसे हॉस्पिटल्स में जाके या हेल्थ सेंटर्स पे जाके या वॉलंटरी सर्विसेज से, तो वो पर्सनल्स कई बार क्या है कि लेते नहीं है सीरियसली और ज्यादा इल हो जाते हैं। सो इन चीजों का हमें ख्याल रखना ही रखना है, उनको भी कहना और उसको भी कहना, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, और दूसरा हमें प्रोवाइड करना है प्रिवेंशन। हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से प्रिवेंशन करनी है। अंडर न्यूट्रिशन भी नहीं होना चाहिए, ओवर न्यूट्रिशन भी नहीं होना चाहिए। वी हैव टू सी कि अगर एनर्जी चाहिए हमें, तो हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स खाने हैं या फैट रिच फूड्स खाने हैं, वो किस किस में मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, देन दिस इज प्रोवाइडेड इन अ टेबुलेटेड फॉर्म इन योर बुक, यू कैन गो थ्रू दैट बुक। प्रोटीन्स हैं, देन ऑल्सो कौन से फूड्स खाने हैं, विटामिन ई रेटिनॉल है वो किस किस में अवेलेबल है, विटामिन डी है वो कैसे अवेलेबल है, और डिफरेंट न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके सारे सोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन अ टेबुलेटेड फॉर्म। You can go through that. You have to remember the names on that the particular nutrition and the amount of that particular nutritive value ingredients in that particular food, ठीक है। And then with this I'll finish with this chapter. I think I have explained in a good way, and then you can go through. I think this is all done for this chapter for today. थैंक यू मैम। मैम Okay. मैं ये तो जो DNHE2 तो पूरा हो गया होगा मैम? हाँ जी सर, हो गए हैं इसके 4-5 चैप्टर्स हो गए हैं इसके, काफी चैप्टर्स हो गए हैं, लेक्चर्स भी हमारे भी बहुत हो गए हैं। जी नाउ मैम। इफ यू वांट स्टार्ट DNHE3 स्टार्ट करना है सर, जी मैम। टू फॉर टुमारो ओनली, फ्रॉम टुमारो ओनली, यस मैम। ठीक है, दैट्स फाइन। सर हाँ जी सर DNHE4 में क्वेरीज आ रही हैं, तो आप प्लीज DNHE3 से पहले DNHE4 करवा दीजिए। इट्स fine, okay, but I'll रिक्वेस्ट। yes, that's fine. With the permission of the sir, I can discuss with the for the DNHE4. But DNHE4 क्या है कि every individual have to work on some particular kind of a problem or project or something else. So please, अगर आप कल देखना चाहते हैं तो come up with your some ideas for that on which you can work. So I'll tell you what kind of the objective you can set, what kind of the hypothesis and how you have to proceed, okay, because it is individually, आपको डिफरेंट डिफरेंट पे काम करना है तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, या फिर 2-3 persons can work on one particular. So tomorrow we'll discuss, then you have to be active with on your phones and all, one by one I'll discuss. ओके मैम। DNHE कल DNHE4 का एक सेशन रखते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है मैम। और वो थैंक यू लंबा मैम। भी जा सकता है सर, DNHE4 एक्चुअली लंबा होता है, वो थोड़ा लॉन्ग भी चला जाएगा सेशन शायद। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू मैम। ओके। सर टाइमिंग्स कुछ चेंज हो सकती हैं क्लासेस सॉरी की, रिया, क्योंकि कल DNHE4 की सॉरी रिया, सॉरी सॉरी। क्या सर? सॉरी, ये चीज नहीं हो पाएगी, टाइमिंग ओके चेंज सर, नहीं नो हो पाएगा, प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं तो टाइमिंग उनकी फिक्स है। यस सर, ओके सर, कोई कि बात अभी नहीं सर, यानी कि फिर कल DNHE4 का होगा। कल DNHE4, और आप लोगों से आग्रह है कि मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया था, उस पर अपनी फीडबैक जरूर दें। अगर पहले दे दी है तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं दी है वो जरूर अपनी फीडबैक जरूर दें। सर मैंने पूछना था कि जैसे अभी हम कर रहे थे DNHE2 का जो थर्ड ब्लॉक है हमारा, है ना, तो अभी तो हमने ये स्टार्ट किया था, अभी इसके तो 3-4 और पड़े हुए हैं ब्लॉक्स, तो इसको छोड़ के हम एकदम से उस पर चले जाएंगे 4 पे, तो ये हमारा सारा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। जैसे शायद आपने पहले सेशन अटेंड नहीं किए हैं, टोटल 5 सेशन हो चुके हैं इसमें। मैंने किए तो हैं, हाँ, लेकिन 1-2 जैसे मेरे पास प्रॉपर आया नहीं लिंक, तो वो मेरे शायद मिस हुए, एक आधा मिस हुआ। अच्छा, तो इसमें लगता है ये हो चुके हैं सारे। टोटल 5 सेशंस हैं इसके, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं।
ये आपके अच्छा है, उसकी वीडियोज है इसकी? बिल्कुल, बिल्कुल सारी वीडियो फेसबुक पेज पे भी हैं और हमारी डिजीज सेंटर की वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध है। ओके सर, ओके, एनी ठीक है क्वेश्चन? सर। एक्सक्यूज मी सर। जी दीप्ति बोलिए। सर कल का सेम टाइम सेम लिंक रहेगा? नहीं, अभी मैं दोबारा लिंक आएगा आपको। ठीक है सर।